ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಪೈನ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, श्री नरेंद्र बाबू जी IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड HOPF, आप सभी का यहाँ पर शुभागमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर हमारे बीच में डॉक्टर के मुरली IPS DGP आइडियल विंग तमिलनाडु, श्री अतुल मिश्रा जी चीफ रेसिडेंट कमिश्नर तमिलनाडु हाउस, श्री सचिदानंद जोशी जी मेंबर सेक्रेटरी IGNCA एवं श्री R सुदर्शन जी। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। सर्वान् मनोरथान् यावत् कर्म समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। बहुमूल्य पुरावशेष को विदेशों से वापस लाना जो विगत शताब्दियों में अनैतिक रूप से हमारे तटों को छोड़ गए थे। पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति हमारे लिए रंग लाने लगा है। भारत सरकार के संकलित प्रयत्नों के कारण अब हमें अपनी धरोहर की निरंतर पुनर्प्राप्ति हो रही है। यदि आंकड़ों की बात करें तो सन 2013 तक केवल 13 पुरावशेष ही देश वापस लाए जा सके थे, जबकि वर्ष 2014 से अब तक 228 पुरावशेष वापस आए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 241 पुरावशेषों की देश वापसी हो चुकी है। राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान 157 पुरावशेष भारत को लौटाए गए हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है। इसी तरह देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा लगभग 108 वर्षों के बाद कनाडा से भारत लौटी। विदेशों में हमारे सभी दूतावासों को वहां की सरकारों के साथ सक्रिय संपर्क में रहने का आग्रह किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आलोक त्रिपाठी एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर वेलकम स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा।
रेड्डी जी, माननीय मंत्री संस्कृति, पर्यटन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, डॉक्टर एल मुरुगन, माननीय मंत्री मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सूचना एवं प्रकाशन, हमारी मंत्री महोदया मीनाक्षी लेखी जी जो आने वाली हैं, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं संसदीय कार्य, श्री जयंत मुरली जी, डीजीपी आइडोल विंग, डॉक्टर सी सत्येंद्र बाबू, डीजीपी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, श्री अतुल्य मिश्रा, चीफ रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, श्री जोशी जी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन एवं आमंत्रित गण, आज ये अवसर है जब इस देश की बहुमूल्य कलाकृतियां जो इलीगल रूप से विदेश में चली गई थीं, उनको विशिष्ट प्रयासों से वापस लाया जा सका। जहां की होती हैं, जिस राज्य की या जिस विभाग की, उनको उनके सुपुर्द किया जाता है। आर्टिफैक्ट्स लीड्स archaeologists to act and further to their actors. So in a sense, they are a link between present and the past. They open a window to our past. A tiny seal can take you 1,000 years back, or a stone object can take you 1,000,000 years back. And these artifacts, which have been retrieved from USA, are the masterpieces. In 1947, Indian Antiquities Export Act was brought, and in 1972, Antiquities and Art Treasure Act came, which stopped export of antiquities. It is only the central government or the agencies authorized by them can export antiquities abroad, and generally for temporary purpose, for exhibitions or on loan. And all those antiquities which have been taken in the past illegally, government is making every effort, Archaeological Survey of India, Ministry of Culture and Ministry of External Affairs, to bring them back. Our efforts are proving, means we are getting success. As you have been informed, a good number of antiquities have been retrieved recently. Sponges which have been brought from Australia and USA are today being handed over to their respective state. Sir, on this occasion, I welcome you all on behalf of the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, Government of India. So welcome to all of you here in this program.
May I now request Dr. C. Sailendra Babuji, Director General of Police, Government of Tamil Nadu, to please grace the occasion. Development of North Eastern Region, Honorable Minister of State, Minister of Culture, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Information and Broadcasting, respected Mr. Alok Tripathi, respected Mr. Tiwari, Director, Antiques of ASI, Mr. Atulya Mishra, IAS, Resident Commissioner, Government of Tamil Nadu in Delhi, members of the press, Director General of Police, Idle Wing, Tamil Nadu Police, Dr. James Murali, officers of the Idle Wing who are assembled here, members of the press, ladies and gentlemen. A very warm afternoon to all of you. It's a great honor to be the part of this very grand occasion. Tamil Nadu, as you know, has a rich heritage in the form of cultural artifacts, noted for their excellent craftsmanship. Such heritage artifacts have been handed over from generation. Tamil Nadu is home for some of the most popular and culturally significant idol treasures globally. Many of the idols in Tamil Nadu are exquisite, antique, and they command astrological prices. The reason for that, all of us know it, the value of these cultural treasures has skyrocketed in the recent years, making them the ideal target for the thieves. No matter where they come from, once they leave the country, they can be sold in the black market and they disappear forever, as we have done. In Tamil Nadu, we have an idle wing CAD police. They started in the year 1983 with just one superintendent of police and 13 policemen. But today, this idle wing CAD has a Director General of Police Officer, Dr. James Murali is here. There's an IG of Police. There are 2 additional superintendents of police and more than 138 designated police officers and policemen for this idle wing CAD of Tamil Nadu Police. This unit has done a tremendous work. Usually, any artifact or idol worth more than 5 lakh of rupees. Investigation of missing of these cases, these idols, are handed over to this very specialized unit. You will be surprised to know that the idle wing CAD of Tamil Nadu Police have succeeded since its creation in recovering more than 878 idols stolen from various temples all over the state of Tamil Nadu. Since 2012, the same unit has been successful in recovering many more idols which are stolen from the state. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has ordered that every missing idol from the temples of Tamil Nadu should be recovered wherever they are in the globe. I really congratulate the Director General of Police Idol Wing and all their officers for the remarkable work. 8 are metal idols and the 2 are stone idols. They are not here. They are very heavy, 330 kilograms of weight. Another is 290 kilograms. We have to really, make arrangements for their transportation back to Chennai. So they are not here. All these idols were recovered in the last 1 year. The idols wing of this idol wing has these idols repatriated from the United States and Australia by sending letters of regulatory under the MLAT after painstaking collection of documents and photographic evidence and through investigation, which took, of course, several months, and our legal ownership of the idols were also proved. I'd like to thank the officers of the Government of India, Ministry of Culture in particular, for assisting us in the retrieving these idols from abroad. I also like to thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for giving encouragement to the idle wing CID for making all budgetary provisions for the thorough investigation, pursuing the cases in foreign countries, and for all the related activities of the Tamil Nadu Police. I thank you very much once again, wish you all the best, and thank you for this great opportunity. और अब मैं Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy
एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு கிஷன் ரெட்டிஜி அவர்களே, இன்னும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கலாச்சாரத்துறையினுடைய இணை அமைச்சர்கள் மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய திரு அர்ஜுன் மெக்வால்ஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திருமதி மீனாட்சி லேகி அவர்களே, தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழக காவல்துறையினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு சைலேந்திர பாபு அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கலாச்சாரத்துறையினுடைய அதிகாரிகளே, தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகளே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரர் சகோதரிகளே, பத்திரிகை நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இது ஒரு வரலாற்று மிக்க சிறப்பான நிகழ்வாகும். நாம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய 8 ஆண்டு சாதனைகளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். 8 ஆண்டுல எண்ணற்ற சாதனைகளை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த எண்ணற்ற சாதனைகளில் ஒரு சாதனை, நம்மளுடைய நாட்டிலிருந்து நம்மளுடைய பழமையான புராதனமான சிலைகளை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கிற நம்மளுடைய புராதன சின்னங்களை மீட்டெடுத்து இன்றைக்கு அதை தமிழகத்தினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய கையில் இன்றைக்கு ஒப்படைக்க இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி. தமிழகம் ஒரு கலாச்சாரமிக்க நாடு, பண்பாடு தமிழர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பண்பாடு உள்ள பகுதி. தமிழ்நாடு என்றாலே ஆன்மீகமும் அறிவியலும் நிறைந்தது தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு. ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஆண்ட பூமி நம்மளுடைய தமிழ்நாடு என்றால் அது மிகையல்ல. தமிழக கலாச்சாரத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ராமேஸ்வரம் கோவில், ராமசாமி கோயில் எந்தளவு சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கிறது என்பதை நம்மளால் காண முடியும். அதே போல் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில், அதே போல் திருச்சியில் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கம் கோயில், அதே போல் மாமல்லபுரம், தஞ்சாவூர் பகுதியில் இருக்கின்ற பல கோயில்கள், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், நாமக்கல்லில் இருக்கிற மலைக்கோட்டை, இப்படி தமிழகத்தின் நாமக்கல்லில் இருக்கிற நரசிம்மர் கோவில், இப்படி எண்ணற்ற கோயில்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய பண்பாடு எவ்வளவு பழமை வாய்ந்தது என்பதை நாம் இங்கு காண முடியும். நம்மளுடைய மாமுனிவர் திருவள்ளுவர் அவர்களுடைய ஆரம்பமே அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அப்படின்ட்டு தான் தன்னுடைய திருக்குறளையே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். முதல் வரியே பகவானை, கடவுளை வணங்கிவிட்டு தன்னுடைய திருக்குறளை ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஒரு உலக மறையான திருக்குறளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். சங்க இலக்கியங்களிலும் அகநானூறு, புறநானூறு, ஔவையார், இப்படி தமிழினுடைய பெருமைகள் மிக பெரியது. தமிழ் மண்ணிற்கு ஒரு மிக பழமை பேரும் இருக்கிறது. சுப்பிரமணிய பாரதி போன்ற கவிஞர்கள் வாழ்ந்த பூமி தமிழ்நாடு. இன்றைக்கு ஆசாதிக்கு அமிர்த் மகோத்சவம், அதாவது சுதந்திர இந்தியா 75வது ஆண்டை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற அந்த தருணம், தமிழக சுதந்திரத்திலே கூட நாம் எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தினுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது என்பதை நமக்கெல்லாம் தெரியும். சுப்பிரமணிய பாரதி ஆகட்டும், வ.உ. சிதம்பரனார் ஆகட்டும், வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் ஆகட்டும், இப்படி எண்ணில் அடங்காத தலைவர்களுடைய பங்களிப்பு நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய பங்களிப்பாக இருக்கிறது. இப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம்
தமிழகத்தினுடைய நம்முடைய சிலைகள் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் இருந்தது. நம்முடைய பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய முயற்சியால் வெளிநாடுகளிலிருந்து இன்றைக்கு மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இதுதான், நமக்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து எந்த அளவுக்கு நாம் 2013 வரலும் வெறும் 13 சிலைகள் மட்டும்தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். வெறும் 13 சிலைகள் தான் வெளிநாடுகளிலிருந்து 2013 வரலுமே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 2014க்கு பிறகு இந்த 8 ஆண்டுகள் நான் சொன்னேன்ல, எண்ணற்ற சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிற சாதனை தலைவர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 228 நம்மளுடைய புராதன சின்னங்களை வெளிநாடுகளிலிருந்து இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதில் இன்றைக்கு இங்கே வைத்திருக்கின்ற சிலைகள் USA, UK, ஹாலண்ட், பிரான்ஸ், கனடா, ஜெர்மன், சிங்கப்பூர் இப்படி பல நாடுகளிலிருந்துமே நாம் இங்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இன்று சிறப்புமிக்க தமிழகத்தினுடைய சிலைகள் சோழர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலையும் விஜயநகர பேரரசினுடைய ஆட்சி காலத்திலையும் இருந்திருக்கிறது. 12ஆம் நூற்றாண்டு, 11ஆம் நூற்றாண்டு, 15ஆம் நூற்றாண்டுகளில் நம்மளுடைய அங்கு இருந்த இந்த சிலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பது தமிழர்களுடைய பண்பாடையும் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் தமிழர்களுடைய கடவுள்களையும் நாம் வெளிநாடுகளிலிருந்து இன்றைக்கு திரும்ப கொண்டு வந்து நம்மளுடைய நாட்டிற்காக, நம்மளுடைய தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மண்ணில கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்ற பெருமை நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களையே சாரும் என்றால் அது மிகையல்ல. பெரியவர்களே, யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். சொல்றது யாரு வேணாலும் சொல்லலாம், நான் அதை செய்யறேன், இதை செஞ்சிருவேன், வான வில்லா வளைச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு. ஆனா சொன்னபடி செய்பவர்கள் அரிதானவர்கள். அந்த அரிதான மனிதர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அந்த அரிதான மனிதர்கள் ஒருவர். அந்த அரிதான மனிதர் திருவள்ளுவருடைய வாக்குப்படி தான் என்ன சொன்னோமோ அதை இன்றைக்கு நாட்டுக்கு செய்திருக்கிறார். நம்முடைய அரிதான புராதன சின்னங்களையும் மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார், நம்முடைய தமிழகத்துக்கு சேர்த்திருக்கிறார். அவருக்கு தமிழக மக்கள் சார்பில், தமிழகத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் நன்றிகளையும் தமிழக மக்கள் மூலியம் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில உங்களிடம் கலந்து கொண்டு இந்த சிலைகளை தமிழக அரசாங்கத்தினுடன் ஒப்படைப்பது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद. May I now request Honorable Union Minister of the State for Culture and External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi ji, to please address us all. Kishan Reddy ji, English? Okay. Andarki namaskaram. Our Culture Minister, Mr. G. Kishan Reddy ji, our MOS, Mr. L. Murugan, Arjun Meghwal ji, ASI DG, Secretary Tamil Nadu, and Alok ji, all my friends here. I must say that one data which everyone should know, one is that nothing can be worse than theft of culture. An unfortunate part of it that many people who denigrate others' cultures are the ones who are engaging in thieving activities. And there's a big smuggling racket which operates transnationally. And now there is a case built up against all such activities. The best part is that many institutions are involved in it, many individuals are involved in it, and there is less and less awareness around it. Tamil Nadu is a state which has a few thousand temples, which are few thousand temples of antiquity. Some not kept well, as is the case elsewhere. And many places the security issues are a challenge. The worst part is that from the time this Antiquity Act was brought in, from 1978 and earlier period, only 13 antiquities were brought back to India till about 2013. From 2014 till now, the last 8 years of
our government under the leadership of Prime Minister Modi has brought back 228 antiquities. Now you will say, when few thousand have been stolen, what is 228? I'm purposely comparing the effort which has gone in. And since we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, one element of Azadi Ka Amrit Mahotsav is also taking pride in our heritage and culture. Until and unless people of India take pride in their heritage and culture and consider gods as gods, not as a property which can be bought and sold, this kind of activity will continue. Because people who are engaging in these activities obviously do not think these statues have godly powers. The ones who believe and have the faith that these statues are not just statues of metal, bronze or stone, but they represent the faith and power of civilization. A few centuries ago, people who built it put their heart and soul into it, and people who kept worshipping them obviously had their faith in them, are not the ones or cannot be the ones stealing them for alternate purposes. The ones obviously who are stealing them also indicate the way lack of faith, lack of pride in one's own heritage and culture, and valuing things not for the worthiness they have, but valuing things on the basis of material cost they can fetch in international market. That's what has happened. I'm very happy that today central government under the leadership of our Honorable HCM, Mr. Kishan Reddy, has taken the step forward, and of course the overall supervision and guidance remains that of the Prime Minister. And Honorable Prime Minister on his recent visit to US was the one who further facilitated the process of bringing back a lot of these antiquities. And today we are handing it over through the Secretary from Tamil Nadu. I just hope and pray they are kept as safe, knowing their worth and knowing how people greedily look over these pieces, not necessarily out of faith and cultural affinity, but sheer financial worth of these antiquities. We are able to protect them as Indians and take pride in the Indian heritage, and thus celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, that with Azadi comes the pride, with Azadi comes the knowledge, with Azadi comes the freedom of being suppressed and oppressed by cultures which are alien to us. Getting freedom from that thought is what freedom is all about. Wish you all a very happy Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is working with the Tamil Nadu government and restoring these pieces to the place where they belong. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री जी, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र के मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन जी, केंद्रीय मंत्री फिशरीज, डेयरी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, विद्यावती जी, डायरेक्टर जनरल ASI, हमारे शैलेंद्र बाबू जी, DGP तमिलनाडु, आलोक त्रिपाठी जी, ADG ASI, हमारे डॉक्टर जयंत मुरली, सचिदानंद जोशी, अतुल मिश्रा जी जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं तमिलनाडु हाउस के, और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय सज्जनों, मातृशक्ति और पत्रकार, ये आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारे ऐसी कलाकृतियां, ऐसी मूर्तियां जो अनैतिक तरीके से कुछ लोग ले गए विदेशों में, उसको वापस लाने का भारत सरकार का प्रयास
जो मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार, जिसके 8 साल 30 मई को ही पूरे हुए, आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उसमें नेशन फर्स्ट है। अभी मीनाक्षी जी ठीक ही कह रही थी कि 2013 तक ऐसी मूर्तियां जो चोरी होकर बाहर चली गई, वो 13 ही मूर्तियां वापस आई। और 14 के बाद 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर के अब तक 228. Now you see the scale and speed. Now you have to judge it. और खाली ये मूर्तियां चोरी हो गई, वापस लाए, ये विषय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें आप किसी योजना को उठा लीजिए और उसकी स्केल को मापिए और स्पीड को मापिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि इस देश में कच्चे मकानों को पक्के मकान बनाने की योजना थी, जिसका नाम था इंदिरा आवास। एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 मकान बनते थे। 2014 में जैसे प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, स्केल बदला और स्पीड बदली। 2 और 3 मकान किसी ग्राम पंचायत में बन रहे थे, रुपए 40 और 45 हजार मिल रहे थे। अब कहीं पे राज्य सरकारों की सहयोग से 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.5 लाख तक का मकान बन रहा है। और एक ग्राम पंचायत में 100, 200, 300 तक मकान बन रहे हैं। तो ये है काम करने की स्पीड और स्केल। ऐसा ही इसमें मूर्तियां चोरी हो गई, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया। अभी हमारे शैलेंद्र बाबू जी बता रहे थे कि तमिलनाडु में आइडल मिनिस्ट्री का महकमा है। अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय से काम कर रहे हैं अपन। अब सब जानते हैं कि इसके बावजूद भी 13 एंटीक्विटी ही बाहर से आ पाई है, और मोदी जी के आने के बाद 228। यू सी द डिफरेंस। ये काम करने का एक जो तरीका प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि नेशन फर्स्ट। हमारे देश की कोई भी चीज ऐसी अमूल्य कृति जो बाहर चली गई अनैतिक तरीके से, लोग चुरा के ले गए, ऐसे साधनों से ले गए, पता ही नहीं चला, उनको वापस लाने का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हाथ में लिया। और सही कहा भी कि आजादी के अमृत महोत्सव में यह भी एक कार्यक्रम है कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको भी वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। सुरक्षित आने के बाद, और जब जो कोई स्टेट या कोई क्लेम करता है हमारी है, उसके बाद भारत सरकार उनको ससम्मान वापस लौटाने का काम करती है। मैं ये ऐसा दूसरा फंक्शन है जिसमें सम्मिलित हुआ हूँ। एक पहले फंक्शन हुआ अन्नपूर्णा देवी का, जो बनारस से एक मूर्ति अन्नपूर्णा देवी की कनाडा चली गई थी और उसको वापस लाया गया। उसमें सभी भारत सरकार और सभी एएसआई और सभी का सहयोग था, मिशन का भी सहयोग था। और उसके बाद वो वापस जब आए तो दिल्ली में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद हमें भी सौभाग्य मिला कि मैं उत्तर प्रदेश का उस समय सह प्रभारी था, तो एक जगह अन्नपूर्णा देवी मूर्ति का स्वागत करने का अवसर मिला। धन्यवाद। और अब मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण से अनुरोध करना चाहूंगी कि ब्रिंगिंग बैक आवर हेरिटेज रिटर्न ऑफ तमिलनाडु एंटिक्विटीज इस पुस्तक Huh?
तथा नंदीकेश्वर, 12वीं शताब्दी की चतुर्भुज विष्णु, देवी पार्वती, शिव पार्वती की मूर्ति, संत संबंधर की 2 मूर्तियां शामिल हैं। ये सभी मूर्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की गई हैं। इनमें से प्रदर्शित करती हैं। 2 प्रस्तर में भव्य रूप से उकेरी गई हैं प्रतिमाएं विजयनगर काल की हैं। उक्त 10 पुरावशेषों में से 4 ऑस्ट्रेलिया से तथा 6 संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की गई हैं। ये सभी मूर्तियां आइडल विंग तमिलनाडु की पीस प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें आज इस भव्य समारोह में तमिलनाडु सरकार को सौंपा जाना है। और अपने सभी माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आइडल विंग तमिलनाडु के अधिकारियों को औपचारिक रूप से सभी पुरावशेष को हैंड ओवर करें। Respected friends, Honorable Minister, Ministry of Culture and Parliament Affairs, Sri Arjun Meghwal ji, Honorable Minister, Ministry of Culture and External Affairs, and a leading advocate, Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Minister, Fisheries and Animal Husbandry, Dairy, Information and Broadcasting, my friend Dr. L. Murugan ji. Today's function, representative from Tamil Nadu government, Dr. Sri Shailendra Babu, DGP from Government of Tamil Nadu, Srimati Vidyavati ji, Director General Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, Government of India, Sri Alok Tripathi, Additional Director General Archaeological Survey of India, and officers of Ministry of Culture, Government of India, Ministry of External Affairs, State Government of Tamil Nadu. Today, it gives me immense pleasure to be here in this event where we are bringing our gods to homeland. Over the last 8 years, the Government of India, under leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we have taken several steps to preserve our ancient civilization and ethos, protect our culture and spiritual heritage, and propagate Indian knowledge, systems and traditions across the world. Bringing our gods to home is one of such initiative that rooted in preserving, promoting and propagating our heritage. The initiative is led from the front of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Friends, Prime Minister Narendra Modi ji has made the return of our murtis and antiquities as one of the prime objectives of the overseas travels.
these antiquities have been returned from foreign countries, including the United States of America, United Kingdom, the Netherlands, France, Canada, Germany, and Singapore, etc. Our Prime Minister personally relationships and warm ties with world leaders from all these countries have led to the respective nations swiftly identifying and stolen antiquities, sustained and persuasion and cooperation till their return. Therefore, all the credit goes to our Prime Minister Narendra Modi ji. He has not only made efforts to retrieve these antiquities. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji also personally carried them from the different countries with him during his official tours from abroad. During the recent visit, our Prime Minister to the USA, 157 antiquities were returned to India, is being the largest single collection India got back so far. Friends, you will be aware that over the last 8 years, just now my ministry colleagues also informed, last 8 years the government has brought back 228 heritage objects. Only 13 antiquities were brought back to India between independence to 2013. Friends, the figures speak for themselves, respect and reflect the importance this government attaches to our heritage. With the sustained effort of the Government of India and 228 antiquities being brought back since 2014, the total number has now become 241. Friends, India is a continuously living civilization. Therefore, our art, culture and heritage is not just available for viewing the museums, but can be witnessed in our day-to-day activities. We protect nature, we respect nature, that is our culture. We perform puja to nature, we number of natures, we festivals to celebrate the gods, we worship, the pujas we perform, the food we eat, the dance and music performance appreciated. These are all a testimony to our ancient civilization roots from further. Keeping this in mind, our approach has been to continuously integrate our culture into our lives rather than to position them in museums. Therefore, there is an attempt to restore our stolen heritage. It is to place it was taken from. It is only appreciate these ideals and antiquities wherever possible are installed back at the place they were stolen from. Friends, they do not deserve to languish in the warehouses of museums. Our history belongs to its geography.
you would recall the ideal of goddess Annapurna Devi was returned from abroad. It's a rightful place at our cultural city of Kashi Vishwanath Temple, Varanasi, UP, after 108 years. This is a step in this direction, in the above mentioned direction. Now, there is a plan to continue returning heritage objects to their locations wherever feasible. This program is a first in many such public events that will be held in continuation with the respective states, government and institutions. Today, I would like to congratulate all the officials of Archaeological Survey of India and every individual who has been working on protecting and retrieving our stolen antiquities. I would also like to thank Ministry of External Affairs for their tireless efforts. Friends, today it is a matter of pride that we are returning to Tamil Nadu a total of 10 antiquities from Australia and the United States of America. Out of these 10 antiquities, 4 were retrieved from Australia in the years of 22. 6 were brought back from USA. Friends, these 10 antiquities, including 2 Dwarapalas stone sculptures from Mudraswara Madiyar Temple, Tirunelveli district, Tamil Nadu, 1 dancing Nataraja in bronze from Mariamman Temple, Tanjavur, Tamil Nadu, 1 sculpture from Kankalamurti and a sculpture of Nandikeshwara from Narsingadhar Swami Temple, Tirunelveli district, Tamil Nadu. A 4-armed Vishnu of the 12th century and a sculpture Devi Parvati from Arulmigu, Varadaraja Perumal Temple, Ariyalur district, Tamil Nadu. A sculpture from Shiva Parvati Devi from Vanmega Naga Natha Temple, Tanjavur district, Tamil Nadu Temple. 2 sculptures of standing Sambhadar from Shivaneshwar Temple, Nagapattanam district, Tamil Nadu. I would also like to thank the Government of United States of America and the Department of Homeland Security USA for facilitating to the ideals returned from their country. I truly believe that retrieval of antiquities is a matter of pride for us, but at the same time a responsibility towards our homeland. It is a matter of pride that our continuous efforts have started to bear fruit, and we now have a steady retrieval of our heritage from abroad. India is celebrating the 75 years of independence through Azad Amrit Mahotsav. India, 100 years of independence celebrations enters coming 25 years in 2047. Our Prime Minister will call regularly
the coming 25 years from India, this is a Amrut call, this is a Amrut time, golden time. This is an opportunity to take the leads as a global protector of indigenous culture, traditions and heritage. This will also allow an open and honest conservations and decolonization to take place. I once again thank all the persons and stakeholders for participating one of the historical this event, and also I congratulate media friends, those who are covering this program once again, and thanks to everybody, friends and elders and departmental officers. Thank you very much. Thank you, sir. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Everyone, it's a great honor for me to propose the vote of thanks today in this function. We are extremely honored by the gracious presence and the everything enlightening talk of our honorable ministers, Shri Kishan Reddy ji, Minister for Culture, Tourism and North Eastern Region Development, Shri Arjun Meghwal, Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi, Minister of Culture and Minister of External Affairs, Dr. Murugan, Fisheries, Veterinary and Dairy Development, Minister of State. We are extremely thankful for their gracious presence and for giving an enlightening and inspiring talk to all of us. We are also thankful to Srimati Vidyavati, our DESI, who has been leading from the front in all. Shri Arjun Mishra, Chief Resident Commissioner, New Delhi, Government of Tamil Nadu. Shri Jayan Murali, DGP, Idol Wing, Government of Tamil Nadu. All the officers of Ministry of Culture, ASI, Government of Tamil Nadu. Special thanks are due to Dr. Sachidan Joshi, the Member Secretary of the IGNCA, for giving us the space and also cooperating in conducting of this event. We are extremely thankful to you, sir. We are extremely grateful to the media and the electronic and the print media for giving a wide coverage to this function. With the permission of the chair,
I will talk a few words in Tamil. இங்கே சபையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம். இடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மத்திய அமைச்சர்கள் திரு கிருஷ்ண ரெட்டி அவர்கள், திரு மேக்வால் அவர்கள், திரு மீனாட்சி லேகி அவர்கள், டாக்டர் என் முருகன் அவர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய துறை சார்பாக நான் நன்றி வந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருமதி வித்யாவதி அவர்கள், தலைமை இயக்குனர் ASI, நம்முடைய இயக்கத்தின் லீடிங் லைட், அவருக்கு நம்முடைய சிறப்பு நன்றி. அதுபோல தமிழ்நாடு இந்திரா காந்தி தேசிய மையம் அவர்கள் நமக்கு இந்த இடத்தை கொடுத்து தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி உறுப்பாகிறது. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஆல். All our guests from media are requested to please collect this book. Thank you very much. It was indeed great having all of you at the occasion. टारगेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. टारगेट पार्टी कांग्रेस पार्टी किधर है अभी? डेली वो डिक्रीजिंग. इसलिए कांग्रेस पार्टी law will take own course. You will not involve. Even my party or my government or Prime Minister, you will not involve. Administration law will take own course. As per court direction they are doing. लगातार ये काम चलेगा. जितने भी पुलिस केसेस भारत में रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बारे में रिव्यू कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रहे, और विदेशों में जितने भी म्यूजियम्स होगा, जितने भी स्टॉल्स होगा और व्यक्ति के ऊपर किधर भी होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ हम MOU का इंटर हो रहे, MOU इंटर होकर उस गवर्नमेंट के हेल्प के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा हम अलग अलग देशों से ये मूर्ति एंटिक्विटीज लाने के लिए हमारा प्रयास लगातार चलेगा. Okay, thank you.